Hi. So today I'll be discussing a few mathematics problems from MA Economics entrance sample paper for Ashoka University. Okay. So we'll be doing only the math section or उसमें भी only the main questions, not the basic ones. Okay. Let me show you. Okay. So here is the math section, and I'll be leaving the first two questions here, 13th and 14th. Let's start from this one. Okay, let's see. The question says that the function where the domain is r plus. R plus means, well, r plus is basically this set is called r plus. And if you are given r plus plus, that's strictly positive. Okay, so r plus में zero included रहता है, तो which is basically non-negative set of real numbers. यहाँ पर आपको given है that the function is differentiable, it is strictly concave, it is strictly increasing, and you are given that f0 is equal to 0. Okay, then you have to check which of the following statements is true. Okay, so let's see the options. F dash x और एफ एक्स बाई एक्स इसे कंपेयर किया जा रहा है हर ऑप्शन में. नोटिस दिस, एफ डैश एक्स एंड एफ एक्स बाई एक्स, वेदर दे आर whether f dash x is less than or more than or equal to as compared to fx by x. Okay, that's what you need to compare. Let me write all the information. आपको given है f0 is equal to 0. Okay, आपको given है f is strictly increasing and concave, and ultimately you have to compare f dash x and fx by x. Okay, that's the problem. So let's solve this. ये आ गई हमारी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर. Let's solve this problem. Okay, so we have to compare this. तो ये compare कर रहे हो आप. So let me write it like this. X f dash x, and let me bring this to the other side, minus fx. Okay, so let me call this gx. ठीक है, ये जो कॉन्केविटी है, what that means is कि strictly increasing, that means f dash x is strictly positive. It is concave, which means f double dash x is negative. तो यहाँ पर f dash x नजर आ रहा है, बट डबल डैश x का कोई यूज अभी तक दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो what I can do is, what if I differentiate g. ठीक है, अगर मैं g फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी दैट. वेल, यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल. सो x एज इट इज f डबल डैश x प्लस f डैश x एज इट इज x का हो जाएगा 1. ओके, माइनस f डैश x. ठीक है, f dash x, this gets cancelled out, and g double dash x will be x f double dash x, and जहां पर हमें पता है that f double dash x is less than 0. Okay, what about x? Let's see, x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? Well, here, yeah, it is saying that for all x more than 0. Okay, तो x has to be strictly positive. यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं that x is positive. Okay, so this thing here is positive and f double dash is negative, so which means the whole thing is negative. ठीक है, the whole thing is negative. Okay, और ये फंक्शन शुरू कहाँ से होता है? जो इसका डोमेन था वो r प्लस था, which means including 0. तो let me try to find out g0. Well, g0 will be equal to 0 f dash 0 minus f0.
So this is obviously 0 0 into f dash 0 0, and minus f 0 आपको given है question में 0, so this is 0. तो ये जो gx function that starts with 0, okay, it starts with 0, and g dash x अभी हमने निकाला है, it's negative, so which means this g is strictly decreasing, okay. अगर 0 से start हो रहा है और strictly decreasing है तो, and g 0 is 0, so this implies g is negative, right? अगर कोई चीज 0 से start हो रही है और strictly decreasing है तो obviously this has to be, for any positive x for this part, it has to be below the x-axis, right? क्योंकि strictly decreasing है, ऊपर नहीं जा सकता है. Okay, so g is negative. और g था क्या? g here is this x f dash x f dash x minus fx. This is negative. So which means x f dash x is less than fx. Okay. So which means fx upon x, fx की तरफ it is bigger. It is bigger than f dash x. Okay. Fx upon x is strictly greater than f dash x. That's what we have found out using all the information. Okay. So fx upon x is strictly greater than f dash x. So that's option A. Okay. All right. Answer is A only. Now we have a few optimization problems here. ठीक है. मैं information लिख लेता हूँ and then let's solve them. Solution निकालना है to the following optimization problem. वेल अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी अच्छे से आती है देन you don't need to apply Lagrange or Kuhn-Tucker conditions. All those things will waste your time in entrance. So what I'll be doing is I'll be using the techniques from कंज्यूमर थ्योरी, जहां पर आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हो गिवन द बजट कंस्ट्रेंट. तो उसी तरीके से मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ ग्राफिकली. ओके. So what you have is, what you have to maximize this alpha y minus beta x. Okay, where x and y are more than equal to 0. Okay, constraint is x plus y is equal to 1, and इसके अलावा alpha and beta both are strictly positive. Okay, if that's the case, you need to find the solution. Or basically, आपको x और y की optimum value निकालनी. Okay, so answer is 0 1. Let's see. So here's the problem. What I'll be doing is कंस्ट्रेंट प्लॉट करते हैं एंड देन आईसीस यानी कि इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करेंगे एंड देखेंगे कि मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी आपको कहाँ मिल रहा है, उस तरीके से करें. ओके. सो लेट्स बिगिन विद x plus y equal to 1. That's the constraint. This is x plus y equal to 1. What about the equation of the IC? Well, that's going to be alpha y minus beta x. एक रैंडम लेवल ऑफ यूटिलिटी ले लेते हैं, मे बी लेट्स स्टार्ट विद जीरो. कि जीरो लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए हाउ विल इट लुक लाइक. तो y विल बी इक्वल टू बीटा एक्स अपॉन अल्फा. ओके. सो बीटा और अल्फा पॉजिटिव है, सो स्लोप पॉजिटिव होगी, तो विल गेट अ, और यहाँ पर इंटरसेप्ट जीरो है, so it will look something like this. I don't know the slope, beta by alpha की values नहीं है, but it has to be something positive. So that's how my IC will look like. This is for zero level of utility. Now suppose मैं इसे थोड़ा सा increase करने की कोशिश करूँ, maybe 0.1. तो in that case यहाँ जीरो की जगह जो यहाँ पर ये जीरो प्लस चल रहा है, जीरो अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एक्स, ये इक्वेशन बनी थी. तो अगर जीरो की जगह 0.1 कर दें तो बेसिकली वी हैव गॉट सम पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिस टाइम. ये थोड़ा सा ये ऊपर चल जाएगा, मे बी इट स्टार्ट फ्रॉम हियर.
सो वी कैन नॉट बी श्योर कि एग्जैक्टली यहाँ आएगा या नहीं, बट व्हाट यू आर श्योर इज कि इट विल बी अबव द ग्रीन आईसी। ओके, जो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी है यहाँ पर, उसका जो आईसी है दैट्स गोइंग टू बी अबव द प्रीवियस वन, द लोअर वन। ओके, सो बेसिकली आपकी जो यूटिलिटी है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा करते करते व्हेन यू कीप ऑन प्लॉटिंग हायर आईसीज, अल्टीमेटली आप यहाँ तक जा सकते हो। बेसिकली क्योंकि आपका कंस्ट्रेंट यहीं तक है, इसके आप ऊपर नहीं जा पाओगे, बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ आर मोर देन इक्वल टू जीरो। सो दिस इज योर ऑप्टिमम पॉइंट, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स इज जीरो एंड y is equal to 1. तो x0 y1, that's the solution. ठीक है, मूविंग ऑन। नाउ दैट यू हैव सीन दिस टेक्निक, आई वुड लाइक कि ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। ओके, पॉज दिस वीडियो, ट्राई इट एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। लेट मी टेक द इंफॉर्मेशन। दिस टाइम यू आर मिनिमाइजिंग x प्लस वाई, तो ऑब्वियसली बस आप आईसीज को नीचे जहां पर यूटिलिटी कम हो रही है उस डायरेक्शन में लेकर जाओगे। ओके, and this time x and y can be any real number. Okay, and constraint is x plus y square, x square plus y square less than equal to 1, and now you have to find the optimum value of x and y. Okay, so here's the problem. Let me draw the constraint first. Okay, let me make it a proper circle. We know that this is the equation of a circle, right? X square plus y square equal to 1. So radius 1, center 0 0, origin. So that's how roughly the constraint will look like. It includes interior part as well because less than equal to it. Anyways, x plus y, that's the perfect substitute type आपका ये function है. So if that's the case, then we know the IC looks like this, maybe like this. ये होता आपका मैक्सिमा, राइट? बट आपको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करोगे, वी नो दैट इट विल गो डाउन। ओके, ऐसा करते करते दिस पॉइंट इज गोइंग टू गिव यू द मिनिमा जो आप ढूंढना चाह रहे हो। ओके, सो दैट्स योर एक्स स्टार वाई स्टार। अगर आपको इसे निकालना है, देन द थिंग इज आपके पास व्हाट यू नो इज कि यहाँ पर स्लोप ऑफ द आईसी, ये जो ब्लू लाइन है, इट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस सर्कल, राइट? तो सर्कल है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 minus x square. Now we shall find out the dy by dx, which is 1 upon 2 root of 1 minus x square and then minus 2x. So this is equal to minus x upon under root 1 minus x square. And in case of the perfect substitute type IC, maybe the utility level here is some C. So y will be equal to C minus x. So dy by dx will be equal to minus 1. Okay, so we can simply equate both of them. So minus x upon under root 1 minus x square will be equal to minus 1. Okay, so x will be equal to under root 1 minus x square. Squaring both sides, x square equal to 1 minus x square. 2x square is equal to 1. X square will be equal to 1 by 2. So this implies that x will be equal to plus or minus 1 by root 2. ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट और वहां पर x नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली विल टेक x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2। एंड द अदर थिंग दैट वी नो इज कि वो ये जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, and since it is on the circle and equation x square plus y square equal to 1,
I can substitute 1 by root 2 here, minus 1 by root 2 plus y square equal to 1. So y square equal to 1 minus 1 by 2, which is equal to 1 by 2. This implies y will be equal to plus minus 1 by root 2. बेसिकली ये आपको मैक्सिमा और मिनिमा दे रहा है. 1 by root 2, 1 by root 2, दैट्स मैक्सिमा. माइनस 1 by root 2, माइनस 1 by root 2, दैट्स गोइंग टू बी मिनिमा. और हमें इस क्वेश्चन में मिनिमा चाहिए. ठीक है. This point here is 1 by root 2, 1 by root 2. And the point that we need is that's minus 1 by root 2 minus 1 by root. Okay. Uh, let's see the options. Minus 1 by root 2, minus 1 by root 2. C. Okay. Moving on. Question 18th. Okay. So what I need to do is again minimize करना है. Any real number, x and y can be any real number. ये रहा आपका constraint. Okay. तो जगह है मेरे पास, यही कर लेते हैं. So शुरू करते हैं मोड एक्स से. तो मोड एक्स विल लुक लाइक. ठीक है. मोड एक्स, फिर मोड एक्स में एक वन सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये एक स्टेप नीचे चला गया. तो फ्रॉम जीरो नाउ इट इज दैट द किंग इज एट माइनस वन. फिर उसके बाद पूरे पर मोड लग गया. यू स्टार्टेड विद मोड एक्स विच इज दिस. फिर मोड एक्स में आपने वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा ग्राफ एक स्टेप नीचे आ गया. एंड देन जब आप उस पूरे फंक्शन पर मोड अप्लाई करोगे, मोड का काम है जो भी चीज नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना. यानी कि इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है. जो इशू है वो यहाँ है, जो नेगेटिव पार्ट है. मोड का काम है पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना. जितना जो भी चीज जितनी नेगेटिव है उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है. सो जो भी चीज जितनी नेगेटिव है, लेट मी चेंज द कलर, ये उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी. यानी कि जो ये माइनस वन तक जा रहा था, मोड लगने के बाद वो जो किंग के ऊपर वन पर आ जाएगा. जितना नेगेटिव है उतना ही ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है. एंड वी कैन रिमूव दिस पार्ट. ओके. सो that's how the constraint will look like. Okay, now we have our constraint. Y minus 2x plot करना है. Y minus 2x, let's start with some zero level of utility. मैं उस कंज्यूमर थ्योरी की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ. जस्ट ट्राइंग टू अप्लाई दैट इन मैथमेटिक्स. y इक्वल टू 2x, जीरो लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए. 0 + 2x, तो इंटरसेप्ट इज 0, स्लोप इज 2. यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी मोड एक्स से वो स्लोप बन रही होगी, तो जो हमें यहाँ बनाना है वो स्टीपर बनेगा. तो जीरो से पास हो रहा है लेकिन स्टीपर बनेगा. सो मे बी लाइक दिस. ओके. तो दिस इज y इक्वल टू 2x. मुझे करना है मिनिमाइज. सी, मैं यूटिलिटी लेवल अगर बढ़ाता हूँ 1 + 2x करूंगा, तो ऑब्वियसली वो जीरो की जगह अब वन से पास होगा लाइक दिस. बट हमें मिनिमाइज करना है, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा. ओके. सो लेट मी टेक दिस. ओके. तो क्या ये ऑप्टिमम है? दिस is this point the optimum value? No, because I can still bring it more down. Okay, let me extend this part. Okay, क्या और लोअर आई सी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट. देखो यहां पर कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है. नोटिस दैट इस पॉइंट पर कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड है, राइट?
मैं इसे और नीचे ला सकता हूँ, और इस पॉइंट पर कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड, तो आई कैन कीप ऑन गोइंग डाउनवर्ड्स, लोअर आईसी, लोअर यूटिलिटी का आईसी बनता चला जाएगा। मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ, इससे पास होता रहेगा। वाई? बिकॉज इस लाइन की स्लोप, ये जो राइट, ये जो कर्व है, दिस स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप 1 है, और जो हम ये आईसीज बना रहे हैं उसकी स्लोप 2 है, तो वो हर बार उसे कट करता जाएगा। बिकॉज एक लाइन अगर उसकी स्लोप 1 है और दूसरी लाइन अगर 2 है, they'll definitely intersect each other. तो we can keep on making lower utility ICs. तो इस प्रॉब्लम का कोई एंड नहीं। दैट्स वाई वी डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन दिस केस। ओके, और अगर आप मैक्सिमा की बात करो तो वो भी नहीं मिलेगा, बिकॉज सिमिलरली ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो आपको ना यहाँ पर मैक्सिमा का सॉल्यूशन है ना मिनिमा का सॉल्यूशन। ठीक है, सो इन दिस केस प्रॉब्लम दिस देर इज नो सॉल्यूशन। Okay, it will basically move towards infinite. Okay, so that's it. We don't have any more problems. So let me know if you face any issue.